चलो गाइस, वेलकम टू द न्यू सीन। नई सीन लेके आ गए जिनशिन पैक की आयातो की स्टोरी कोशिश करेंगे। अब पार्ट 2 है। फर्स्ट जो मॉर्निंग सीन हुई थी उसका। लेट्स एंजॉय द म्यूजिक। Hi Masmagan, gamer, gaming. Hi Sebastian, welcome to the stream. Thanks for joining. हाँ तुम पहुँच जाओ। म्यूजिक एंजॉय करो, रात का म्यूजिक। I am fine. What about you, Sebastian? Thank you, Sebastian, for liking the stream. You can join us. You can enjoy with us the Ayato story kist we are going to do, or you can send me friend request. My UID is in the description. रात का म्यूजिक अलग होता है जिनशिन इम्पैक्ट में। I like to see, thanks for liking. हाय, 9 मिनट तक हूँ। एसजी का टूर है। ओके जॉर्ज, कोई नहीं, तुम्हारा वॉशन कोई और ले जाएगा, तुम पीछे हो जाओगे जॉर्ज। हाँ, ना 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 ना। Oh no, it's Nightbot. What happened, Sebastian? Yo, Ayakar friend, welcome back. Enjoying music? ना ना ना, मैं पीसी में हूँ, मोबाइल में खेलूंगा। ओके, हाय मयंक, वेलकम बैक। नाच के पागल हो जाओ या हो ऐसे ही। लिरिक्स क्या था? लिरिक्स आगे है ना 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 ना। म्यूजिक एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। खत्म यार है। हाँ खत्म। चलो चलो, स्टोरी को आया तो आया का हस्बैंड, तुम्हारे साले की स्टोरी जानने वाले हम, तो तुम्हें तो रहना ही चाहिए। Please delete this pod because I hate this pod. Why, Sebastian? If you have a bad memory with this bot. My Nightbot in this channel, Nightbot is very good. He is very friendly. Here, he will not give you not disturb you or. Hello friends, chai pili chai अंशा। जहाँ पे मिल जाए तकिया तुम चादर तान के सो जाओगे। आई हेट दिस स्पॉट। वाई मोशन लॉयल गवर सब्सक्राइबर। अच्छा जाइन, ऐसा नहीं है कुछ है। अंशिका, मेरे आया तो का हाथ देखो, लाल देखो, यहीं पे छोड़ा था हमने लास्ट टाइम, याद है ना स्ट्रीम पे। टॉप 10 पॉइंट्स नहीं, टॉप 10 डायमंड्स देखो, टॉप 10 डायमंड्स आ गया। गाना है ये। अच्छा हाँ पता है मुझे। बिकॉज दीज वर्ड्स आर अनोइंग एज हेल। नो ब्रो, हाउ यू गॉट annoyed by them? Let me
लेट मी मेक माई कंडेंसेशन फर्स्ट। मैं तो हमारे सर्वर में आ गया। अच्छा यार, रहने के लिए Among Us is dead. Now let's play Roblox, I guess. Among Us is not dead bro. Among Us is super active. कंडेंसेशन बना देते हैं, 5 बन जाएंगे। नहीं 5 नहीं बनेगा, 1 ही बन पाएगा। क्रैश, टर्निक क्रैश, टर्निक क्रैश, टर्निक क्रैश। अब टॉप डायमंड लिखना होगा तुम्हें मेरे हिसाब से, तभी आएगा। टॉप डायमंड लिखना होगा, टॉप पॉइंट्स मत लिखो। अब पॉइंट्स, अब डायमंड्स क्या है, पॉइंट्स की जगह डायमंड आने के आई थिंक मुझे आपके सर्वर से बैन दे दिया है। किसने दे दिया? फ्रेंड में जाकर मेरे पे क्लिक करके चेक इन्फॉर्मेशन में क्लिक करो। ओके, मेरा टर्निक क्रैश हो गया था अभी। लेट मी टेल द रीजन व्हाई आई डिड इन माय ओपिनियन। हाँ, टेल मी वेयर इज योर रीजन? दे कमेंटेड ऑन माय वीडियोस। So what is the problem that they are commented? Or maybe someone using Nightbot named, some person using Nightbot name for disturbing you. Lag. अबे मेरा 100 आज कहाँ पर है? जाहिन, वो सब रीसेट हो चुका है, वो सब रीसेट हो चुका है। चैट पढ़ा मेरा? हाँ पढ़ लिया। गाइड डोंट टेक टेंशन, टर्निप्स के सस्ते न रहे, नमक न से। एंड 3 these pot are the worst pots ever. Note, if you like pot, I can handle your opinion. Sebastian, here I think someone pranked you or someone is disturbing you through bots. But in our channel, all bots are very friendly. They are not gonna disturb you. Or what is the second reason? You only typed first and third. Where is the second reason? नहीं, second they spammed me. अच्छा, they spammed me. Sometimes they spam. हाँ ठीक हो गया। चेयर दो मॉड को। नहीं दे सकते अभी, मेरे पास चेयर नहीं है खुद। लेट मी क्राफ्ट रेसिन। तीन हो गए, 2 और चाहिए। यही तो शुरू करते हैं आयातों की, पहले आयातों की, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा करने का है नहीं। स्टोरी को ये नहीं आया तो इसका नाम है साइप्रेसस कस्चस। ओके, इसे भी अनलॉक कर सकता हूँ मैं। ये भी अनलॉक हो गया। लेट अस फाइंड। ये अभी क्या ना ओनी इवेल वाला, ये रही, मिल गई। ऊपर का चैट पढ़ो। विशाली, यस आई एम 100% बिकॉज आई एम वॉचिंग इन फ्रॉम 2021 जनवरी। यस अनिकेत, आई थिंक मुझे आपके सर्वर से बैन दिया है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन। आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो। At least I am the one who gave you the most first time, Aniket. Star Snatch Clip is known for its views. Welcome. How can I help you? टर्निक फिर से क्रैश हो गया था। क्या हो रहा है टर्निक को आज? टर्निक क्रैश हो रहा है। अंति का स्पैम मत करो, करो पता तो चले मुझे कि अबे यार मेरा चैट जब पढ़ते हैं लैग क्यों? मैंने पढ़ तो लिया तुम्हारा चैट, पढ़ तो लिया। अच्छा क्या रिप्लाई था निकित?
उसका रिप्लाई क्या ही देना है ब्रो। उसके भी ऊपर का चैट पढ़ो। और भी ऊपर है क्या कोई? अबे मेरा 100 आज कहाँ पर है? सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ को पता करने के लिए हमें सारे वॉच टाइम को रिमूव करना पड़ा। अब मंथली वॉच टाइम काउंट होता है, ओनली मंथली वॉच टाइम काउंट होता है बस। लेट्स गो टू द आयातोस प्लेस। कामिसा तो आया का मिल जाए तो मज़ा आ जाए। एडवेंचर गिल्ड पे है कुछ हमारे। ला 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 ला। अंजिका मेरे सर्वर की चैट पढ़ो, क्या चल रहा है पता नहीं। मस्त चमक की स्पिनिंग वाई भाई, चमक की भाई और चमक की स्पिनिंग मानता हूँ, पर बाकियों ने भी दिया है यहाँ पे। सब वैशाली ने सबसे ज़्यादा दे रखा है अभी वॉच टाइम मुझे, जितना मैं जानता हूँ। वैशाली ने मुझे काफ़ी वॉच टाइम दिया है। यहाँ पे है नो लैग। नहीं देखा। Was there something we could help with? Yes. I'm afraid I have another task that requires your assistance. The Adventurers Guild has recently received a commission directly from the Tenryou Commission. The assignment is both urgent and dangerous. After assessing the assignment, the Guild has concluded that seasoned adventurers are required. Naturally, you came to mind. तेरह अगस्त को मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। सही कहा। नहीं देखा अभी। लैग हो रहा है क्या? लैग नहीं है अब। लैग अब नहीं है लैग। चाइन स्टाइल है मस्त मगन तमीम का स्टाइल, लेकिन अभी तक चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आया। नाइस। बाय द वे निकित जी, आपका चैनल देखते हुए 1 ईयर कंप्लीट हो गया ना? हाँ वो तो हो गया होगा आराम से। लैग है तो ठीक है, पागलों की तरह बफरिंग स्पैम मत करो। अरे स्पैम करना ज़रूरी ताकि मुझे पता चले कि हाँ हो रहा है लैग। सच में डोंट डू इन द चैट यार। अरे मैंने बोल रखा है कि इन लोगों को स्पैम करा करो ताकि मुझे पता चले। मुझे पता चलना चाहिए क्योंकि कभी कभी होता है नहीं पता चलता मुझे। आया का हस्बैंड वैसे मैंने सही स्टार्ट किया ना। अरे कैथरीन से ही बात करनी होती ना आया तो से क्विज में सबसे पहले। सॉरी एएफ की थी। अरे तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, तुम आराम करो। आराम करो, आराम भी ज़रूरी है। अपने फ़ोन को मैं स्कैन दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। मुझे लग रहा है क्या पता वायरस आ गया इसलिए बार बार वो क्रैश हो रहा है। नॉट पागल। कितने पागल का वो मजाक कर रहे हैं। मेरे पॉइंट फुल डायमंड है, पॉइंट नहीं फिर डायमंड कह दोबारा। मुझे लग रहा है ये ईटो की क्विज है, पर क्या पता। अरे यार मैं ईटो की क्विज नहीं करना चाहता, गलती से कहीं ईटो की चालू कर दी मैंने गलती से। मैं ईटो की नहीं करना चाहता अभी। ईटो में तो शायद अलग ही मज़ा आएगा। पॉइंट 1 मिनट रुक जाओ बस, एक बार मेरा फ़ोन स्कैन हो जाए। 50% स्कैन हो गया है। क्या पता है कोई वायरस निकला है उसकी वजह से क्रैश हो रहा बार बार। हाँ यार अंश का रेस्ट करो ना तुम। रहन तो आज मत स्ट्रीम पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो यश, वेलकम टू द स्ट्रीम।
हमारा टर्न क्रैश हो रहा है बार बार आज, पता नहीं क्यों। एवरीवन फैन मंच का रेस्ट कर लो। हाँ लॉल 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 लॉल। क्या वंशिका को पता नहीं उसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे सर जी क्या हालचाल। बाय द वे मिली शादी हुई या नहीं? क्या कैम्बल इज ग्रेटर देन गैमल इज ग्रेटर देन गैम्बल। अच्छा स्पैम करो, ये स्पैम करो लॉल। अंशिका को बुखार है क्या? ये तो रेस्ट कर, मत करो, स्पैम करो लॉल। नो वन इज नूब हेयर। अच्छा नाइस। अरे आपको पता है क्या कि पोकेमॉन स्वॉर्ड कैसे खेल सकते हैं मोबाइल में? नहीं यश यश मैंने अभी न्यूज़ देखी। जब मैं स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा था ना, मैंने यूट्यूब खोला, उनमें पता है न्यूज़ क्या आ रखी है? यश उस पर एक न्यूज़ आ रखी है ऐसी, जो फैक्ट्स वगैरह थोड़ा लीक देते हैं ना, उसमें एक लीक बताया हुआ है कि ना सरीना है। हाँ सरीना सनीरा रिटर्न हो रही है भाई, जानता हूँ। अच्छा मैंने अभी अभी देखा यार, सरीना वापस आ रही है यार। थोड़े लंबे टाइम के लिए रहे, मज़ा आया सरीना। पर उसमें वीडियो में जो मैंने देखा, पर कि उसमें तो एंड में जब एपिसोड एंड हो रहा होता है तभी अलग हो जाते हैं और तभी मिलते हैं। ये सरीना कौन है? जिनशिन कह रहा पोकेमॉन में सरीना करीना मतलब कैटरीना अंशिका लाल। नहीं सर एक एपिसोड के लिए है बस यार। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। इतने टाइम से सब वेट कर रहे थे, इतना लंबा होता हो सकता है फिर से रिटर्न हो कब उसमें वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में। डू यू नो जिनशिन इज गोइंग टू बी बैन सून? क्या मैं गो टू वॉशरूम? अरे जा सकती हो, किसने मना किया? पोकेमॉन में है कहने में। हाँ आया का हस्बैंड अभी हार्ट अटैक दे देते तुम। वैसे ही क्या पता ये बैन हो जाए, क्योंकि ये है तो चाइनीज़ कंपनी की। हाँ उसमें है वो। नहीं होगी सर बैन। फिर ठीक है यार, नहीं होनी चाहिए यार। ये कैथरीन कह सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं हम। ऐश ऐश की कह सकते हैं हम, ऐश की पोकेमॉन में ऐश की। यश मौज में लॉल। या पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड खेलना है या मैं तो पोकेमॉन की गेम्स खेलता ही नहीं है ज़्यादा। आती भी तो नहीं रे, मूड ख़राब है यार। यश तुम्हारा मूड क्यों ख़राब रहता है? चलो अच्छी बात है, वो शुरू नहीं हुआ मेरी गेम के हिसाब से। आया तो की चल रही है ना, देख लो मैं बस अब लैग ना हो बस। हाँ आया तो कि मैंने नेविगेट कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी ही ख़राब है, क्या मूड की बात कर रहा है? अरे ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। फेवरेट सॉन्ग क्या है? हिंदी, बंगाली, पाकिस्तानी, नेपाल को छोड़ के मेरा इंग्लिश सॉन्ग है। तो अब तो है ना आयातो वाली। हाँ आयातो वाली आ गई। Those two look familiar. Ah, it's Ippei and Shinojo. ओए इप्पे मिल गया हमें। इप्पे आज हम आया कार में आज इप्पे की बात कर रहे हैं और इप्पे मिल गया आज।
You forgot already? लॉल हम भूल गए. That one is Shinojo. Back when we first arrived in Inazuma, we escorted Hiragi Chisato out of Rito with him. Remember? That's how we got out. Next to him is Ippei, Kujo Kamaji's servant. That day when we hung out with A, he came and told us that Kujo Kamaji had gone missing. He was really worried. मुझे लगा था मिस्सी ऐश सीएफ होगी. अच्छा, मुझे ये ऐसा बहुत थ्योरी चल रही थी. और ये भी बोला गया था कि इन दोनों की शादी भी होगी. ये भी बोला गया था. मिस्सी ने अपने मुंह से भी बोला था एक एपिसोड में कि इन दोनों की शादी होगी, मिस्सी और ऐश की. पर ऐश और सरीना सच में रिलेशनशिप में ऐश की तरफ से कुछ नहीं था, पर सरीना की तरफ से फीलिंग थी. यानी कि सांस कम लो. ठीक है, मैं मर जाता हूँ, सांस नहीं लेता. मिस्सी क्यूट, सरीना उससे भी क्यूट है. बहुत क्यूट है यार सरीना की हरकत है. All part of Paimon's job as your guide. चलो अच्छी बात है, पाइमन अच्छे काम कर रही है. यार कोई पोकेमॉन गेम खेलनी है. अच्छा, वही खेल लो जो अभी आई हुई है. Anyway, let's go say hi. हाय. सच में मेरी सांसों की आवाज आ रही है कि तुम लोगों को? माइक ऑफ कर लेता Hi, हूँ मैं. Ippei. Hi, Shinojo. What are you guys doing here? Oh, it's you. Thanks so much for your help last time. I was just ordering some clothes when I ran into him. You know these two as well? ऐसी चीजें यहाँ नहीं पूछते साइलेंटर. सीधा चले जाओ. He is the one when we first arrived we have to pass letter to someone and he was sad because the girl he loved was someone else love letter. lol. I can't read lol. lol. अंशिका टेक रेस्ट करो ना रे. रेस्ट करो. Yes, they helped me and Master Kamaji out a great deal last time. I've never had the chance to say thank you properly. What about you? How do you know them? Also a chance encounter. Our Lady had them join us as additional guards for a goods escort in order to sneak out of Rito undetected. So we all know each other, huh? What a coincidence. Not exactly. We've only just met. We both came here to order some clothes and got to chatting. Somehow we ended up on the topic of Master Kamaji and Lady Hiragi's relationship. Wait, it's okay to talk about that, right? It's probably fine. They've known about it for a long time already. Oh, yeah! Paimon remembers those two had a thing. In fact, that was why Chisato wanted us to deliver a letter. That's old news, though. So, why has it come up now? Are they taking the next step or something? We have reason to suspect that they'll be getting married soon. म्यूट और फोकसिंग और स्टोरी बोथ. आयाकरमेंट बोथ. बोथ. Wow, that's great! They can finally make it official! Of course, this is just personal speculation. They haven't announced anything, and we wouldn't dare to ask. I was instructed to place an order for some formal wear for a big banquet. Turns out that Ippei received the exact same instructions as I did. They're both preparing for a banquet at the same time. They're both purchasing the kind of fine wine and confectionery normally reserved for big festivals. It's hard not to put two and two together. Lady Hiragi has been in high spirits recently, and I heard she's on a diet as well. Surely it's all for the wedding.
हेलो हैप्पी, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो हैप्पी? What's wrong? चलो गाय, बेरोजगार गवाल गोइंग बाय बाय। और बाय द वे बेरोजगार हम सब हैं, तुम अकेले नहीं हो। और अनलॉयल किसने कहा कि तुम अनलॉयल हो? ओ लॉयल हो तुम भी। Oh, don't mind me. She's about to be happily married to the love of her life. I genuinely couldn't be happier for her. इस एक्सक्लेमेशन डायमंड्स। ठीक हो भैया, नाइस। एक्सक्लेमेशन डायमंड्स लिखो। अब डायमंड्स में चेंज हो गया। वाह, अब हम मैरिज करेंगे। पता नहीं बहन को कब ढूंढना शुरू करेंगे। लॉल, अरे आया का हस्बैंड, ये हमारी बात नहीं हो रही। तुम सही से पढ़ो। ये जिसको लेटर वगैरह हम पास कर रहे थे उनकी बात हो रही है। जब रीतो में पहली बार आए थे, हमें बाहर निकलने के लिए लेटर देना था। लॉल। Right? I think so too. It's fantastic. हाँ, करेंसी चेंज हो गया है। अंशिका तुमसे बात की क्या? हैप्पी ऐसे क्यों बोल रहे हो उससे? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी अनलॉयल हूँ। नहीं, यश लॉयल हो तुम सब लॉयल हो। Yes, but we shouldn't let ourselves get overexcited. What if it's all a big misunderstanding? As things stand, we have no actual proof of a wedding. Now, if they sent me out to deliver wedding invitations, that would be a different story. स्पेलिंग गलत लिखिए। DIAMONDS है। सुपर खेलोगे नहीं। वन लाइक टू कन्फर्ट दिस गाय। प्यार में बुरा हुआ। लॉल। हाँ यार, इस बंदे के साथ धोखा हुआ। बेचारा प्यार करता था पर वो किसी और से प्यार करती थी। लॉल, मैं तो मिल्की वे का भगवान हूँ। अच्छा सही है। हैप्पी क्यों ऐसे बोल रहा है उसको? हैप्पी मैं बस मॉड हूँ इसलिए तुझे वेलकम किया। सही कहा, पर ऐसे क्यों बोल रहा है उसको? Shinoju doesn't look like he's taking this very well at all. Sorry, I just haven't slept well recently. I'm ashamed to be so out of sorts at work. I'm not living up to my responsibilities, either to the Kanjo Commission or to my lady. लॉल आया का हस्बैंड। लॉल, अब देखते रहो ना अपने साले की, इसको देखते रहो। देखते क्या पता चल रहा है अपने साले के बारे में। तो तुम्हें ज़्यादा जानना चाहिए। क्या हुआ था लेंटा वैसे? इसके साथ धोखा हुआ क्या? नहीं। Are you worried about their wedding? Not exactly. It's just everything feels kind of up in the air until they make it official. I get what you mean. I really do. We need this wedding to be set in stone before the celebrations can really begin. What should we do? Should we just straight up ask them? I don't know. That seems a bit rude. Right! If Ayaka knows about it, that means it's a sure thing. ओहो, आया का हस्बैंड आया का से मिलने वाले हैं हम। देखो पीछे डॉग। I don't think it's a good idea to bother the Yashiro Commission about this. मुझे हैप्पी की चैट्स नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? यश भाई आप नहीं समझोगे। मयंक, अंशिका, शेर, पीसी, हिमांशु, इन सब ने दुख दिया है यार, और सहन नहीं होता ब्रो। इससे अच्छा बात ही नहीं करो। क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने, मुझे बताओ क्या हो गया? ब्लशिंग ब्लशिंग आया कर मैं भी ब्लश कर रहा थोड़ा। यार मैंने कौन सा दुख दिया? हाँ सच में यार, क्या दे दिया? कुछ भी। क्या हुआ हैप्पी यार, तुम बताओ क्या हुआ? It's fine. He and Ayaka are practically best buds. There's nothing to worry about. गाली दी इसको सबने। क्यों दी? किस लिए दी? क्यों दी? किसने दी है गाली, बताओ मुझे। अभी उसे बैन मिलेगा, बैन या टाइम आउट यहाँ पे। क्या करो अभी? गैम्बल करता हूँ। मेरे डायमंड लॉस हो गए और अंशिका जीत गए। चप्पल खा। हाँ है मेरा बे, छोड़ूंगा नहीं, छील रहा तुझे लाल।
Are they planning to marriage in secret? How dare they not invited to eat her food? Paimon angry face, lol. I see. Then thank you. Thank you very much. Having a definite answer will stop my thoughts from running wild. एक मिनट रुको, मैंने लास्ट वाला ये देखा नहीं क्या लिखा था। मैं ट्रैवलर का नाम और आयाका का आया, क्या लिखा था उसमें? बट आई एम नॉट, क्या? मुझे नहीं पता, नहीं थी मैंने। अच्छा अंशिका डोंट लाई, मैंने गली नहीं थी। अरे हैप्पी दिल पे मत लो। और मयंक तू देता है तो झूठ तो बोल मत। हाँ मयंक, मैंने भी कई बार देखा तुम गाली तो देते हो। मैंने कहाँ दी, पर अंशिका नहीं देती। मैंने अंशिका को आज तक नहीं देखा गाली देते हुए। जैसे आपको पता नहीं है मत बोलो। यश को पता है, मुझे भी पता है। मयंक तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो? सही है यार, अपनी बहन को ही फंसा रहे हो। नहीं अंशिका, ऐसा कुछ ही नहीं है, मैंने नहीं दी अंशिका, बताओ। मुझे पता शेर, मैं बोल दूंगा हैप्पी और पीसी ने क्या बोला। शेर को यश बता देगा, पर हैप्पी और पीसी ने क्या कहा? हाँ पीसी आज स्ट्रीम पे आई थी, बस उसने हाई बोल के चली गई थी। वैसे मयंक ने दिया क्या? रहने दे बेटा। इमेजिन याई एंड आयातो जो तुमने मुझे भेजा था वो तो फिर फुल सेट हो जाता है। ओह ठीक है, मुझे पता। अब हैप्पी सब भूल जाओ, भूल जाता है। हाँ बट मैंने कभी किसी को नहीं दिया, मैंने ही अनिकेत को दिखाया था। मुझे पता है सहा नहीं होता, बट मरने का मन करता है। बट जिंदा इसके लिए थोड़ी ना रहता है। हैप्पी सब भूल जाओ, टेंशन ना लो। मुझे लगा कि मयंक ने गली नहीं दिया। यार मैंने नहीं दिया है, बट कभी किसी को गुस्से में रहा। मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैंने गली नहीं दी। आपको पता होगा नहीं क्या? टैलेंट है तो अच्छा बच्चा है। वाट बता रहे हो गाइस? 12? हाँ ये छोटे बच्चे हैं। क्या खेल रहे थे जॉर्ज? क्या खेल रहे थे? मैंने कभी नहीं निकाली लात। ब्रो अभी आँखों से पानी निकल रहा। ब्रो रोना आ रहा है रोज। यार हैप्पी टेंशन मत लो यार। अगर तुम्हें फिर सच में बुरा लग रहा है, नहीं हो रहा सहना, रोना आ रहा है, तो तुम चाहे तो जा सकते हो। इतने दिन बाद सिम रे लॉल। हेलो शेर, वेलकम टू द स्ट्रीम। हैप्पी तुम चाहे तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं जा रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते? लॉन्ग वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करता, कोई देखता नहीं, व्यूज नहीं आते। हैप्पी चिल करे भाई, भाई की तरफ मैं फुल पावर देता हूँ। अच्छा काल बॉट लो, ये काल बॉट नहीं है, मैं काल बॉट नहीं हूँ। यार वैसे भी मेरा मूड तो हर रोज़ ख़राब रहता है। अच्छा अंशिका क्यों आ रहा है इसको रोना? मैं एक दिन केला खा रहा था, पर एक दिन अकेला हो गया लॉल। आईडी के काल बहुत ही शेर, तूने हैप्पी को गाली दी क्या? शेर भी देता है गाली, सर्वर पे देखा है मैंने उसका। हाँ वो तो देता ही है। आयाका अब रेडी मत करो। लेट्स मीट आयाका। आयाका के कितने दिनों बाद मिलने वाले हैं यार। उसके लिए एक तोहफे खरीद लेते हैं। आयाका पर तोहफे खरीद ले उसके लिए। मैं तो देता हूँ, अनिकेत भाई की परमिशन है। अच्छा मैंने परमिशन कब दी? मैंने परमिशन तो नहीं दी, पता नहीं हैप्पी बोल रहा है। अच्छा ये है माय वाइफ। उताव को बुलाओ, आया का हस्बैंड उताव को बुलाओ। उताव का बताएंगे। हाँ याद आया, उताव का रिवील करेंगे आया का को आज। मुझे बैन दिया था शेर ने, अरे पता नहीं
खुद ले ली गिफ्ट, खुद ले ली गिफ्ट। सर्वर पे कोई इज्जत ही नहीं है ये तो, तुम चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, सर्वर तुम लीक कर सकते हो। तुम स्ट्रीम पे तो आते हो ना, कोई नहीं। जिस दिन दिया था शेर ने उस दिन सच में तो अच्छा यार, हैप्पी तेरी सबसे ज़्यादा इज्जत है। हाँ यार, स्केयर्ड ब्लश कर रहे थे ना, स्केयर्ड डर गए। क्योंकि बतिया का हस्बैंड ही नाम क्या है लाल। मेरे पीसी से लड़ाई हुई थी और मेरे को फालतू मैच कर जा रहा था पूरे मोड के। अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था, तुम्हारी लड़ाई भी होती है। चलो आया कारपेंट की शिकायत करते होता वाली। This place impresses me every time I come here. It's so magnificent, but still so elegant. अब बस लड़ाई करूँगा यार, टेंशन की बात नहीं है। अब बस स्ट्रीम पे ध्यान दो और डायमंड रन करो। ये कंट्रोल क्या करे यार। We'll just wait here. We don't want to cause any extra trouble for you. Ayato wouldn't mind. Honestly, even if we did come with you, we wouldn't know what to say or do once we were inside. So we'll just leave you to it. मस्त मगन, तुमने जो अभी अभी लिखा उसे हाइड तो कर दिया, पर तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। Alright then, we won't be long. हाँ मैं नहीं डरा। क्या लोग चुप रहने का चुप रहने का क्या लूँगा, क्या लूँगा मैं, तुम ही बताओ मैं क्या लूँगा, मुझे भी नहीं पता क्या लूँगा। आयाका के साथ घूमने भेज एक बार। अंशिका हैप्पी, उस टाइम फाइट हो रही थी इसलिए यार, वरना नहीं बोलता है किसी को फालतू में। सही कहा यार, यश तो कभी बोलता ही नहीं जल्दी यार। मैं अभी बोला कि लॉस करूँगा पर जीत गया। लो जीत गए ना, नाइस। और कितने जीते हो भाई? अच्छा जॉर्ज जीता है तुम। हेलो लॉर्ड सतन, वेलकम टू द स्ट्रीम। आयातो की कुछ चल रही है। आया का हस्बैंड स्केयर्ड है लॉल। आया का हस्बैंड बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि मैं उसकी शिकायत करने वाला हूँ। आया का हूताओ वाली। आई विल लॉस लॉल। चलो मैं तुम्हें थोड़ा प्रो बनाता हूँ। हाँ तुमने मुझे बताया था ना, वो मुझे समझ आ गया था डैमेज वगैरह का। देखो मैं अभी इसे बिल्ड कर रहा हूँ शिंचो को। मैं तुम्हें अपने बिल्ड दिखा देता हूँ थोड़ा, तुम थोड़े से मुझे वो दे देना सजेशंस। देखो अभी वेपन तो कोल्ड स्टील दे रखा है क्योंकि मेरे पास अब कोई अच्छा वेपन है नहीं। देखो यही पड़े है मेरे पास। प्रोटोटाइप टैंकर, फ्लूट, लायन रोर है, हार्वेंजर ऑफ डॉन है, हैंडी स्वॉर्ड है, कोल्ड स्टील है, और ये भी स्काई राइडर है स्वॉर्ड। ये कौन थी? हार्वेंजर ऑफ डॉन ही है। अपने कैरेक्टर दिखा रहा हूँ। देखो ईथर को मैं मेन एज अ डीपीएस लेना चाहता हूँ, वो मेरा फेवरेट है। देखो अभी मैंने ऐसे फिजिकल डैमेज बोनस दे रखा है इसमें, अभी से मैं धीरे धीरे रिफाइन कर रहा हूँ। लायन रोर ही दे दो फिलहाल, अच्छी है वो। मुझे तो कहा था कूल स्टील दो, मुझे तो कहा था कूल स्टील दो, इसलिए मैंने इसे फुल रिवाइन कर दिया। देखो लेवल रैंक 5 पे है, रैंक 5 पे है। छोड़ो रे बच्चों यार। दूसरा हिमांशु, उसने भी किया है ऐसा। अच्छा यार ये क्या बात होती है कि सर्वर लीव करने की बात आई थी लॉल। अरे ऐसा मत करो। चलो लायन रोर कह रहे हो तो वही दे देते हैं एज योर विश ना। 4 स्टार ऑलवेज बेटर रहेगी। ओके ये फुल्ली रिफाइंड है ना, इसलिए मैं कह रहा था फुल्ली रिफाइंड है। चलो कोई नहीं। अच्छा हाँ एक मिनट रुको, मुझे पहले आर्टिफैक्ट दिखाना है, तो मैं आर्टिफैक्ट दिखाना भूल गया। देखो एम्बलम के 4 पीस दे रखे हैं मैंने, 5 पीस ही मान लो, नहीं 4 पीस। देखो एचपी में मैंने ये दे रखा है शिंचू को, ये वाला दे रखा है एचपी में। फैदर में ये वाला, क्रिट डैमेज दोनों दे रहा है अभी मुझे। अटैक में ये वाला दे रखा है क्योंकि मुझे अभी एम्बलम में कोई अच्छा मिला नहीं है इतना। डिफेंस में ये वाला है मेरे पास, डिफेंस में अभी देना नहीं चाह रहा हूँ इसे, मैं अटैक वाला दे रहा हूँ इसे।
बैनेट है? नहीं यार बैनेट नहीं है, मैं मेन उसे लेके चल रहा हूँ। ये देखो हाइड्रो डैमेज बोनस तो दे रखा है, क्रिट रेट क्रिट डैमेज एम्बलम में। ये क्रिट रेट यहाँ पे दे रखा है मैंने, और इसके स्टैट्स ये हैं। क्रिट रेट 40 है और डैमेज 95 है। अभी भी चल रहा है अपग्रेड। एनर्जी रिचार्ज हमारा 131 चल रहा है। हीलिंग बोनस 0 हो गया है, पहले 30 था। ओप्स ओप्स ओप्स। पहले ईथर का, मुझे ईथर की सजेशन चाहिए। ईथर की सजेशन दो भाई। डिफेंस देना भी नहीं है, बेशक उसे डिफेंस वाले को फीड कर दो। हाँ मैं डिफेंस दूंगा भी नहीं उसे, मुझे पता है उसे एज अटैक देना है। मुझे इसके लिए बताओ भाई, मुझे ईथर के लिए डैमेज बढ़ाना है, इसका डैमेज बढ़ाना है, एज अ मेन डीपीएस से ही बनाना है। मैंने आर्किक नोबलेस दे रखा है, आर्किक पेट्रा दे रखा है 2 पीस। मुझे 4 पीस बनाना होगा इसे। देखो सबसे पहले ये दे रखा है मैंने नोबलेस के, क्रिट डैमेज दे रहा है। अरे एक काम करो, अटैक की जगह एनर्जी रिचार्ज दे देना। एनर्जी रिचार्ज को हर 200 तो चाहिए ही चाहिए ना। 4 पीस नहीं, 4 पीस ना तू इसे। ईथर को, ईथर या ट्रैवलर या दोनों अलग हैं। ईथर और ट्रैवलर दोनों सेम है। जियो ट्रैवलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, लॉर्ड सतन जियो ट्रैवलर। ये देखो यहाँ पे मैंने इसे ये वाला दे रखा है, प्लम ऑफ डेथ। ये दे रखा है एक मैंने क्रिट डैमेज की वजह से अटैक परसेंटेज। एक तो पेट्रा फार्म ही नहीं करना था, मुझे पेट्रा की रिकमेंडेशन मिली थी। मैंने जियो ट्रैवलर किया था ना, जियो ट्रैवलर को यूज़ कर रहा हूँ मैं। जियो ट्रैवलर अच्छा लगता है मुझे, डैमेज अच्छा देता है। 30K तक डैमेज दे देता है जियो ट्रैवलर। एक ये दे रखा है जियो डैमेज बोनस दे रखा है मैंने, कौन सा, ये नोबलेस में। और ये 50% जियो डैमेज बोनस दे रहा है क्रिट रेट के साथ। ब्रो बट 32% क्रिट डैमेज, WTF 32% क्रिट डैमेज किधर? 32 किधर देख गया था मैं? अच्छा ये 32% क्रिट डैमेज दे रहा है। ओ भाई हाँ ये दे रहा है 32% क्रिट डैमेज। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे दे दो, क्या दे दूं? OMG 32 लॉल। तुमने ही तो कराया या का इवेंट मुझे, ये फार्म याद नहीं, भूल गए? डिटेल्स में ये देखो 55 का क्रिट रेट चल रहा है, क्रिट डैमेज 118 का। भाई मुझे आज तक 28% क्रिट डैमेज मैक्सिमम मिला है आर्टिफैक्ट पे किसी पे, लॉल। मुझे ये इंक्रीज़ करना है रेट, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। और मुझे पैट्रिक का ही बोला गया, आर्की पेट्रा मतलब है उसका बोला है। और राइडन शोगन में मैंने कैश दे रखा है, वो भी है। एक बात बोलूँ गाइस, एक दिन ना शेर ने और पीसी ने मेरे को एक सर्वर की लिंक सेंड करी थी, बट मुझे उस सर्वर को ज्वाइन करने का मन नहीं था। मैंने सिर्फ शेर से पूछा क्यों करूँ ज्वाइन, उसने बोला गिफ्ट मिलेगा उससे। अच्छा, और फिर मेरा एडमिन ले लिया। ओहो, एक और 500 मेंबर्स वाला था, उसमें 2 बूस्ट था, पूरे नुक मार दिया, बंदे बैन कर दिए सारे, लॉल। R5 बना दो। R5 क्या ही है? अच्छा रैंक 5 बनाऊंगा। भाई देखो, जिसने भी बोला था पेट्रा फार्म करने का, वो आगे की सोच के नहीं बोला। अच्छा, पर मुझे ऐसा जियो ट्रैवलर ही सुनना है, जियो ट्रैवलर ही उसे चलाना है। अगर कोई और आ जाता है एलिमेंट बढ़िया सा, तो वो अलग बात हो जाएगी। इसे क्या दे रखा, पहले इसके देख लो, मुझे इसके भी एम्बलम दे रखा है, एनर्जी रिचार्ज। पहले वो दिखा दो, एट्रीब्यूट डिटेल्स। देखो एनर्जी रिचार्ज हमारा कितना चला, मैक्स इतना है। क्रिट रेट 53% है, क्रिट डैमेज 101 है,
एनर्जी रिसार्ट 209 है और हमने इलेक्ट्रो डैमेज बोनस भी मिला हुआ है, पर मैंने अभी से दिया नहीं इलेक्ट्रो डैमेज। पेट्रा में पोटेंशियल है मानता हूँ, बट आर्टिफैक्ट कुछ इस हिसाब से फार्म करने पड़ते हैं कि उस डोमेन से सिर्फ एक कैरेक्टर बिल्ड ना हो, मल्टीपल कैरेक्टर फार्म हो। तो कौन सा मुझे सजेस्ट करो लॉर्ड सैथन, तो मैं उसे फार्म करना शुरू कर दूंगा अभी से ईथर के लिए। जियो ट्रैवलर कौन सा वाला दूँ मैं? नोबलेस, इसका भी देख लो। राइडन को मैंने HP क्रिट डैमेज दे रहा है 13 हो रही है अटैक के साथ, ये दे रहा है 5 पेट दे रखे मैंने एम्बलेंट। अबे ओए ये क्या हो रहा है यार, चैट में काहे लड़ रहे हो तुम लोग? यहाँ मैंने क्रिट रेट दे रखा है, क्रिट डैमेज भी 14 है। विशाल यू कांट इंस्टॉल क्या? और मुझे चीची को भी बिल्ड करना शुरू करना पड़ेगा, अभी मैंने कुछ अच्छा खास दिया नहीं है ऐसे। और इसका तो मेरा C2 मिला है, मुझे इसे C2 मिल गया काया का, ये देखो मतलब C1 मिला, C2 कह रहा हूँ। पता नहीं आते ही पीछे लग गए सारे। अरे यार काहे परेशान हो रहे हो तुम लोग, छोड़ दो। That the hero approached the vile dragon's limpid lair. हैप्पी ने बोला था कि उसको शेर ने गाली दी। अरे यार ख़त्म करो ना यार, एम्बलम ही फार्म करो फिलहाल, एम्बलम बेस्ट है फार्म करने। उस तुम्हारी रेड एंड चिंचू का 2 पीस तो लिटरली किसी कैरेक्टर को दे दो। मुझे ईथर का बताओ ना यार, ईथर के जियो ट्रैवलर के लिए मैं कैसे करूँ उसे फार्म? जियो ट्रैवलर फार्म करना है मुझे, ताकि मेरा डैमेज और सब अच्छा हो जाए। चलो आया करे भी मिलना है हमें साथ में। हाँ सब चुप हो जाओ, ख़त्म करो बात सारी। लो यहाँ पे डॉग्स घूम रहे हैं। आया का से मिलने का टाइम हो गया। नॉक नॉक आया का। यार मैं ना मेन प्रोटैगनिस्ट उसे ही ले रहा हूँ, मुझे एज अ स्टोरी लेना है ना उसे मेन, इसलिए। Looking at the board, you've ruined my strategy in one move. Amazing. Now what should I do next? Ayaka, Toma, it's us! Huh? Hey guys, it's been a while. If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. Oh? That voice. Toma, would that happen to be the traveler? Yes. Greetings, traveler. Ayaka speaks of you constantly. Finally, today is the day. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner, Kamisato Ayato. Greetings, both. I have long been indebted to you on my sister's behalf. Finally, I have the chance to express my profoundest gratitude to you in person. इधर तब फार्म करते जब एल्वेडो या जोंगली होता है यार, मेरे पास वो है ही नहीं यार। पर मेरे पास वो है यूंजिन है एज ए जियो, यूंजिन है मेरे पास। अरे रे, अगर बिल्ड करना ही है तो 2 पीस पेट्रा बना ही हुआ है, तो अब उसे 2 पीस दे देना जो कि एम्बलम डोमेन से मिल जाएगा। ओके ब्रो, थैंक्स फॉर टेलिंग। क्योंकि मुझे पता है कि मेन मुझे ईथर को लेके चलना है, मेन एज ए मेन प्रोटैगनिस्ट वही है ना, तो मुझे उसे ही दिखाना है। बाकी को भी देना है सब, पर एज ए सपोर्ट रखना है उन्हें। राइडन को तो एज ए DPS, दोनों DPS रहेंगे ना, अच्छा रहेगा मुझे तो ये।
हाँ तो अपने एंजॉय करता है वैसे करना। अरे यार ओके, इफ यू आर गोइंग टू यूज हिम इन फील्ड फॉर लॉन्ग टाइम यूज फिजिकल ट्रैवलर, और इफ यू आर गोइंग टू यूज हिम एज जियो यूज जियो डैमेज बोनस। ओके यूनजिन ईथर के लिए नहीं बनी। ओके ईथर के लिए तो आयाका बनी है उस हिसाब से कह रहा हूँ। और यू कैन गो फॉर हाइब्रिड टू। यस आई कैन। चलो नॉइले और नॉइले तेरे मोटी को था कभी एग्री विद लॉर्ड सतन। यस आया कार्बन, तुम लॉर्ड सतन को तो जानते होगे भाई। लेट्स कंटिन्यू। Ayaka is out today. If you are here regarding anything related to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. यप आयातो से मिल गया और आयाका से मीट नहीं होगी हमारी। लॉल कोई गलत भी नहीं है अंशिका मैरिज करने में। लॉल एग्री विद। अरे 1 मिनट रुक जाओ यार, मेरा सिस्टम जा रहा है, चार्जिंग खत्म हो रही है इसकी। लेट मी चार्ज इट। लेट्स कंटिन्यू। Oh, hi! Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit, for it is most improper etiquette. ये यूला वाले एटिकेट कलर ट्राई कर रही है मुझे लग रहा है। वापस डीपीएस ना बना के जियो ट्रैवलर को अगर तुम सब डीपीएस या सपोर्ट बनाओगे तो ज़्यादा काम देगा। 14 लाइक होता इंचो ईथर और नोइले। ओके ओके ध्यान देते हैं इस बात पे। आई कर आउट डू यू नो वेयर इज शी। तुम्हें पता होगा ना आया का हस्बैंड। आया का हस्बैंड तुम्हें पता होगा, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें पता होगा कहाँ गई है। Why on earth are you talking like that? Well, he seems like a pretty powerful person. He's already working his way up Paimon's list of people to never mess with. Look! As soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be super polite. You shower me with praise undeserved, my little guest. आया का हस्बैंड अगर बोल दिया अनिकेत ने तो भाग जाना भाग जाओगा ठीक है। बिकॉज जियो ट्रैवलर अगर पता ना हो तो 10% क्रिट रेट देता है। नाइस, सभी पूरी पार्टी को देता है 10% क्रिट रेट। अब मैं बस सीन देखूंगी, चैट नहीं करूंगी। अच्छा सब चुप हो जाओ यार, क्यों लड़ रहे हो बेकार में। शेर फ्रेंड ऐसे ही होते हैं रे। हाँ There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please, relax. रिलैक्स। आज पहली बार मैं आयातो से मिला हूँ फेस टू फेस। Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. Alright, now that that's over, Paimon's just gonna ask the question. We heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. Do you know anything about that? क्या Oh? I wouldn't have thought you'd heard about that yet. I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. The head clans of 2 commissions are to become joined through marriage. This is big news for the whole of Inazuma. जो जियो ट्रैवलर बस से जो फील्ड बनाता है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर रहेंगे उसका क्रिट रेट बढ़ जाएगा। ओ भाई सही है। और मेरे पास जियो डैमेज बोनस भी है, ऊपर से जियो डैमेज बोनस भी है। हो सकता है सही है भाई, मस्त है। चलो भाई नई चीज़ें पता चल गई नॉलेज बढ़ाने के लिए। थैंक यू लॉर्ड सतन, आप यहाँ पे पधारे, हमें अच्छा लगा। Since the Yashiro Commission presides over cultural and ceremonial affairs, it closely involves us, too. Yes. And since the commissions are kind of the face of the Almighty Shogun to the masses, this wedding is one that we have to treat as a serious affair.
अनिकेत आयाका से बोलना, बात बोलने के बाद अप्रैल फूल बनाया। हाँ यही बोलें, कैन यू बिल्ड नोइले बट इट वुड बी ग्रेट इफ शी हैज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन ही नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। अंशिका नंबर 2। Right, makes sense. Ah, two true lovers becoming husband and wife. What a happy occasion. It is. High-profile matrimonial links between two commissions are extremely rare. But these two truly love each other. Tradition should give way to freedom in this case. All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. पिरो लॉर्ड सतन, अरे उसका चैनल है, वो भी जिंशिन इम्पैक्ट स्ट्रीम करता है। आपका हस्बैंड तुम्हें पता नहीं है, वो भी जिंशिन इम्पैक्ट स्ट्रीम करता है भाई। वो पिरो से भी पिरो है। उसने सारे एक्सप्लोरेशन 100% पूरे कर रखे हैं। मस्त मस्त बढ़िया। No need. I'll visit them personally this time. Okay. Huh? But you have other things to be doing. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The Kamisato clan must demonstrate an appropriate level of respect. Yep. The work of the Yashiro Commission is indeed multifarious. Normally, weddings and other ceremonies would come under the supervision of my sister. But she is presently occupied with other matters, and I happen to have a little time to spare. This will be a good chance for me to pay a visit to the bride and groom. Nice. हाँ पता है, मैं विजिट करता हूँ उनका स्ट्रीम। अरे मैं भी देखता हूँ कभी कभी। Oh, and would you two care to join me? जब मुझे टाइम मिलता है और वो लाइव होते हैं, मैं ज़रूर देखता हूँ उनकी स्ट्रीम। I presume you two have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Or is my presumption incorrect? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. We just agreed to help deliver a letter this one time, that's all. Although wait, does that mean we helped make this wedding happen? Yes, हमने ही help की। Payment don't know contribution here. All right then. I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the futile pursuit known as small talk. Wait, you're the Yashiro commissioner, but you can't do small talk? Small talk is a chore. Of course, there are some people in the world who quite enjoy doing chores, but I am not one of them. Toma, I'm heading out with my two guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Not a problem. Take care, my lord. अनिकेत मैं 1 लाख करूँगा, बट रीसेट मत करना प्लीज़। जॉर्ज रीसेट तो यार होना पड़ेगा, क्योंकि वो है ना, रीसेट होना पड़ेगा क्योंकि मुझे बॉस टाइम को करना पड़ेगा यार, बॉस टाइम का काम। तो हमारे बात करें। What's wrong? Are you worried about having to be on your best behavior around my lord? Don't be nervous. He's actually pretty easy to get along with. Well, the vast majority of the time, at least. कहीं पता चले आया का इसके पीछे छुपी है। पिछली बार भी यहीं छुपी थी, पिछली बार भी इसी जगह छुपी थी आया का। मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है। जियो ट्रैवलर यहाँ छुपी थी आया का, मुझे याद है जब पहली बार मिले थे। यहाँ क्या है, कैसा करेगा क्या? और अभी मेरे पापा ने मुझे इतने दिनों बाद मारा कि मैं एक अनजान बंदे से गाली खाकर रोया, इसलिए वो भी ऑनलाइन। मैं तेरे पापा से सब मेरे को दिल्ली के तो मारने का मन नहीं करेगा। अरे यार, अरे हाय टू एवरीवन, हाय शेर।
बट खुश मत हो गाइस, मैं मारूंगा नहीं इतनी जल्दी, कुफू नहीं। मैगी मतलब, अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो हैप्पी? व्हाट इज दिस, जिनशिन और टिंडर? व्हाट? कुछ वाइजू 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या वाइजू लगा? एक श्राइन मेडन है तोड़ा। You're finally... कब से ट्राई कर रहा था लिखने का कि वाईटी हटा रहा था, क्या हटा रहा था? हम हमारे सर्वर गए क्या? हाँ हमारे सर्वर गए मतलब जिनचिन और टिंडा लॉल। आया वांट टू प्ले हाइड एंड सीक। यही का फ्रॉम F1। भाई आज मुझे एक प्लेयर ने हुताओ का अकाउंट गिफ्ट किया। नाइस विवेक कटकर, वेलकम टू द सीन। बहुत बढ़िया यार, तुम्हें हुताओ का अकाउंट मिल गया यार, और क्या चाहिए तुम्हें? इतनी वो भी क्यूट है, पर मुझे आयाका चाहिए। आयाका के बाद हुताओ, बस ये दो मिल जाए बस, और आगे देखते हैं अपडेट में और क्या आते हैं। विजार्डो नॉट विजार्ड, अच्छा लॉल टिंडा। Yashiro Commissioner! Who are these two? They're friends of ours. Paane will do the introductions. So it's true. क्या खत्म विवेक कटकर, क्या खत्म कर दिया? मैं प्यार से विजार्डो बोलती। ओके Well, there we have it. That's it then. So be it. Great, so our hunch was spot on. It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you. So I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is made. Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. That puts my mind at ease. Now, on the topic. We'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? आप लड़की हो क्वेश्चन मार्क लॉल। काश ये से लोग मेरी भी जिंदगी में आते और अकाउंट गिफ्ट करते। काश 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 लॉल। मैं मिल्की वे का गॉड हूँ, नो जेंडर लॉल। Of course not. I'd be honored. जीएफ बनोगी जो लॉल। ओह नो जेंडर, फिर रहने दो। ओह नो जेंडर। I guess this is where I... Goodbye then. बेचारा उदास है यार। Aw, cheer up, Shinojo. I'll try. Thank you. होता है भाई, दिल टूटे, दिल जले, दिल टूटे। मुझे तो लग रहा है आज वैशाली को भी इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें लव स्टोरी चल रही है, अलग ही लव स्टोरी चल रही है स्टोरी में। भाई साहब ये तो रोने लगा यार। होता है यार, होता है, टेंशन की बात नहीं है। लो पहुंच गया। टेंशु काकू में, टेंशु काकू। ए मैं भी लड़ेगा, मैं भी मारेगा तुझे लाल। लव स्टोरी चल रही तो इंटरेस्ट आएगा। वाह, अरे होता है यार, लड़कियों को होता है।
मारो चीचा का लाल। अरे होता है यार, लड़कियों को इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ों में। ब्रो मैंने माया का सर्वर भी लीक कर दिया। मैंने सोचा आपका भी कर दूं, बट एक गंदे इंसान से सब गंदे नहीं होते सर। आप बेस्ट और काइंड पर्सन हो, बट आपका दोस्त। क्या बोलूं सर, शेर को शब्द नहीं। अच्छा हैप्पी, तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर में प्रॉब्लम हो रही है, तुम सर्वर लीव कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बस स्ट्रीम पे आया करो, नॉर्मली स्ट्रीम पे आते रहो बस, और क्या चाहिए। स्ट्रीम पे आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो तूने क्या किया लॉल, मैं सख्त लौंडी हूँ। वही कोई गंदा नहीं है हैप्पी, यहाँ कोई गंदा नहीं। अरे वो तो उसका रोज काम है यार। ये शेर नूब कौन है पहले ये बताओ, ये किसकी आइडिया है? मुझे ये यश है क्या? चलिए सख्त लौंडी ओपी खींची जाएगी। शेर नूब तुम यश हो का? आउटलाइन द फेट। अरे मैं वीजू बोला। Please excuse me. I'll leave you to it from here. ये वीजू कौन है? Okay. Thanks, Ipe. Especially only I can win. वीजू। I apologize that your impromptu visit comes at a busy time for us, Commissioner. Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. Given the close ties between our clans, it seemed only right that I should come and offer the Kamisato clans congratulations in person. ये तो वही था ना जो राइडन से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हाँ ये वही है, पर उसने कोशिश तो की थी यार कम से कम। I'm truly honored. I hope the news didn't come as too much of a surprise. Hey there! We came to congratulate you as well! Since the incident with the Takatsukasa clan, things in the Tenryou Commission have slowly started to stabilize. I'm still acclimating to the position of acting head of the clan. I just hope I'm up to the task, so I can live up to everyone's expectations. You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say you're hardworking, upright, and responsible. I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing, and I finally had the chance to focus a little on my personal life. Well, you're certainly making big progress in that department. Come on now, you're embarrassing me. Pardon me, It's perfectly all right. Please, continue. I'm quite content to listen. It's a joyous occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? You're right. But I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's too sudden? Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. No doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, you will have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Indeed I am. So, please be confident. When your mind is made up, you ought not be worried about things for which you are already well prepared. तो बनाना हूँ। अच्छा केला हूँ, तुम केला हो आया कारवेन। Nevertheless, there is just one small aspect of this that puzzles me a little. केला हो अकेला हो लॉल। Please, go ahead. You've been working hard to bring the Tenryou Commission in line.
This is positive, and no doubt the beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. If you choose now, of all moments, to announce a marriage between the Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission are not likely to be in either of your best interests. चैट मिस हो गई। कौन सी चैट मिस हो गई? ये नाकाम कोशिश वाला तो मैंने पढ़ लिया था यार। नाकाम कोशिश के बाद कोई चैट नहीं है तुम्हारी, बस यही है। तो बनाना हो, केला हो, अकेला, यही है। अनाउंसमेंट करता हूँ 1 मिनट में। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हो तुम? मैं आते ही 6 जा रहा है। लॉल, ये क्या बात? लॉल, ओहो अनिकेत भाई, क्या हुआ? अंशिका, क्या हुआ? Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. This has been my biggest concern for quite a while now. Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. वाइटी ने हटा दिया। हाँ, मैंने जो स्ट्रिक्टनेस कर रखी है अपनी लाइव चैट में, स्ट्रिक्टनेस कर रखी है पूरी। स्ट्रिक्टनेस न्यू फीचर है स्ट्रिक्टनेस का, वो वाला अप्लाई कर रखा है। ऑन्टी ऑन्टी क्या हो गया? ये आंटी आंटी किसे बोल रहे? अनु, ये मुझे ही बोल रही है अनु आंटी। वैशाली अंकल कैसी हो? वैशु अंकल, वैशु अंकल, वैशु अंकल। अनिकेत भैया, आपको अगर पता चलता है कि मैं आपकी कज़न से हूँ तो आपका क्या रिएक्शन होता? मुझे पता है ऐसा होगा तो नहीं। मुझे अच्छा लगता है यार, सच में। तुम कज़न से होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, तुमसे मिलने को मिलता। भाई देखो, इवन NPC आर गेटिंग मैरिड। आई वंडर व्हेन माय टाइम विल कम। लॉल लॉल। ओनी आंटी, वैशु अंकल। So although now may not look like the best timing for this marriage, it may well be the only opportunity we have. अगर भड़ास निकालना जाऊँ शेर पर तो इसके पर नाइट्रो है, अलग ही रिप्लाई देगा और म्यूट भी। तो तुम चैट पे रहो ना, सीम पे रहो, मतलब लाइव चैट पे। भाई देखो, हाँ ये तो पढ़ लिया। पेज देख लेती आपका और सबको डीसी पे भेज देती, DM कर देती बस शेर और PC को छोड़ के। अच्छा, आई डिक्लेयर आया कारपेन द बेस्ट। नाइस। नहीं, इतनी क्यूट सिस के एक आंटी की नहीं हो सकती। अच्छा वैशाली, अच्छा वैशाली, बहुत गलत बात है वैशाली, बहुत गलत बात। Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he was determined to make as much trouble for us as possible. Oh, he is the worst. I can see where you're coming from, but you're only postponing the problem, not solving it. You will still have to face it sooner or later. हाँ, मज़ा आता, मुझे भी अच्छा लगता। नहीं नहीं भाई, आप ही बेस्ट हो। अरे तुम भी बेस्ट हो, तुम सब बेस्ट हो सब्सक्राइबर्स। Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. So coy. Huh? Really? She didn't say. She just acted confused by the whole thing. She really committed to it. I'll never forget the look on her face.
ऑल ऑफ यू आर बेस्ट एक्सेप्ट मी। अच्छा आया गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी बेस्ट हो। Oh. Anyway, as her boyfriend, I knew she was just pretending, so I played along and said, I was only joking about the letter, and then I proposed. After making some disgruntled noises about me making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the wedding. Okay. So you discussed it and decided on a date? We did. I guess it was a chance to finally express our commitment to one another, clearly and completely. And you know what? I think it was about time. ओ ये चमक रहा है। इतना तो हम भी नहीं चमके, हमारा मेन कैरेक्टर भी नहीं चमका, और कोई और कैरेक्टर राइडन शगन को छोड़ के वो चमकी है। आया का भी चमकी है, पर और तो कोई चमका ही नहीं है। नॉन एनपीसी चमक रहे हैं भाई। आई एम अमेजिंग, यस यू आर अमेजिंग। हाँ ठीक है, तुम अमेजिंग। अरे मजाक कर रहा था। अरे यार आया का हस्बैंड देखो, चमक रहा है बंदा। ब्रो कभी भी ऐसे बातें आपसे शेयर नहीं की, ओनली सहलाता रहता, बट कहते हैं ना अगर करते रहते रहे तो डरते रहे तो उनका जोश बढ़ता है। मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा हैप्पी, इतनी चमक बहुत चमक है भाई। आज मन हल्का हो गया, चलो अच्छी बात है, तुम्हारा मन हल्का हो गया। आया कार्बन का कोई मैसेज नहीं आ रहा, मुझे आया कार्बन का कोई मैसेज चाहिए चैट पे। ये सूर्यदेव लग रहा है लॉल। No matter what happens next, I will always be there for her as the one person she can always rely on. चमक तो ऐसे रहा है जैसे गॉड है। हाँ सच में। Oh, give me a break. Sorry, but Paimon's been wanting to say this the whole time. Is it just this dude, or does everyone in love act like this? He just won't stop talking. ही कैन बी मॉडल ऑफ संतूर साहब। सही कह सकते, शक्तिमान नहीं सूर्यदेव है। हाँ सही कहा। Apologies, my friends, and also to Sir Kamisato. I must sound like a fool. Far from it. On the contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. If I had any reservations before, I certainly don't now. I wish you a joyous wedding when the day comes. Yeah, even if it's kinda irritating to see you all smug like this, it's still a happy occasion. Good luck on the day, and have a happy wedding! प्रभु हमको बना दो सब ऑफ द मंथ। देखते हैं यार, जॉर्ज नाइट बॉट पावा पे है और तुम्हारे टॉप 10 पे बने रहने पे है। प्रभु हमें टॉपर बना दो, पढ़ाई में बना दो यार, बना दो। अनु आंटी क्या हो गया वैशाली, क्या हो गया, क्यों याद कर रही है मुझे इतना? मेरा फेवरेट नंबर 4 है, 4 सब ऑफ द मंथ नहीं बना। कोई नहीं जॉर्ज, अब तुम्हारा फेवरेट नंबर भी बदल जाएगा शायद। डिप्रेशन क्या हो गया तुम्हें? अंशिका क्या हो ही हंस रही हो? तुम्हें क्या हो गया वैशाली, काहे का डिप्रेशन हो गया तुम्हें? चलो बाद में बता देना, कोई नहीं, डिस्कॉर्ड पे। Thank you all. It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. जॉर्ज अगली बार बन जाओगे। हाँ उम्मीद मत खो, बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हारा जब टाइम आएगा तुम ज़रूर बनोगे। याद नहीं, परेशान कर रही अच्छा लॉल।
पढ़ाई सुन के डिप्रेशन होता है। हाँ यार बहुत डिप्रेशन होने लग गया मुझे भी इससे। हाउ यू लुकिंग? अब कैसे बताऊं मैं? Very well. I'll see you out. ये हट क्यों नहीं रहा? लगता है ज़्यादा टाइम लग रहा है इन लोगों को जाने में। हाउ टू मेक पाइमन एंग्री, पता नहीं। वेट, बातें सुनते हैं। He seems busy. That must be true for anyone about to get married, right? It's a happy kind of busy, though. How to make Paimon angry? Ingredient is equal to call her emergency food. Don't give her food, and I will leave rest to you. सही कहा, बिल्कुल सही कहा यार। एंग्री पाइमन भी बड़ी क्यूट लगती है। फोटो दे दो अपना। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। 40 दे दो, 40 दे दो। 40 क्या होता है ये? अब मेरे को जुलाई 1 या 2 में लेना सीधा। जून, जुलाई, अब क्या आएगा? मई आएगा ना जॉर्ड। वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना वॉच टाइम देते हो टॉप 10 में आते हो। यानी मेरे ऊपर कुछ नहीं है। नाइटबॉट और स्ट्रीमलैब वो तुम्हारे ऊपर है। नहीं, नाइटबॉट और तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें वॉच टाइम आना होगा टॉप 10 एलिजिबल होने के लिए, और फिर नाइटबॉट करेगा। You're right. Kujo Kamaji is on cloud 9. What do you think, traveler? हेलो सासुके चूची उचीहा, वेलकम टू द स्ट्रीम उचीहा। अच्छा, अब हमें जाना पड़ेगा। कृपया हमें दीजिए जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा ग्रांटेड। अच्छा, शिवरात्रि शिवरात्रि। He chalked it up to her being coy, but that doesn't sound like the Hiragi Chisato I know. It bothers me also. But, unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. लॉल, सॉरी, होता है गलती से। Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on our adventures, we always find a way to get to the bottom of it. आया का हस्बैंड को नाम लेके जो हंसता हुआ। बाय बाय साले दीदी, आई विल नॉट मिस यू। व्हाट? अच्छा, मिस नहीं करोगी? सही है भाई, मत करो मिस। मेक सुसानो, आई वांट टू सी सासुके उचिहा। I see. So that's how adventurers think. In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. This makes it difficult to investigate. My favorite game also. I am also addicted to this game. Secondly, and more importantly, the person involved doesn't seem to care. If we intervene without his blessing, good intentions may lead to catastrophic results. You do have a point. Kamaji doesn't seem worried at all. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. Seeking the full truth would be a long and laborious process. It would be inefficient. Sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. You will like Ayato's quiz more if you like politics, okay? Okay, सासुकी उचिहा। अरे मैं नहीं जा रहा। ये बेचारी जॉर्ड को भगा रही है। नाइस। My opinion is something like this. When something strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the situation itself. If the outcome is positive, and no one was deceived or harmed in the process,
then it is acceptable. We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are, do we? Yeah, I saw Susano at the nice and spicy. I have to say, I'm impressed by your ability to zero in on the issue from such a short meeting. Most insightful of you. You are thorough and thoughtful, just as my sister describes. Huh? But Chisato and Kamaji have already talked everything through, haven't they? Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. I can do Amaterasu. अब ये क्या है? I wish to know Hiragi Chisato's angle on this. Huh. Makes sense, but Paimon still doesn't quite get it. Speak like Susano, but it is Susano. Okay, Susano. Don't worry about it. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. Let's take the opportunity to hear her thoughts. If she's as committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the challenges ahead successfully. But if not... well, life isn't always a smooth journey. रीतो में जाना रीतो काफी लंबा ट्रैवल होगा ये शायद बट बुरा लगा ब्रो मयंक भाई को बहुत कुछ बोल दिया मैंने और सर्वर बिलीव कर दिया आप उनसे बात करके ज्वाइन करोगे सॉरी भी बोल दूंगा उनकी गलती नहीं थी ओके हैप्पी ये कौन सा लैंग्वेज है पता नहीं जापानीज हो कौन सी लैंग्वेज वैसे कहाँ पे No, my sword. ओह देन आई गॉट कर्मा तुम्हारे कौन सा कर्मा मिल गया कौन सा कर्मा का कुछ हो गया तुम्हारे साथ यार आया का नहीं मिली यार आया का देखनी थी आया का से मुलाकात हो जाए मज़ा आ जाए हेलो आई एम सेज ऑफ सिक्स पाथ ओके There is still much to prepare for the wedding. Should we also invite some prominent business leaders who frequently visit Rito? At the very least, we should send them invitations. I agree. Ah, hello there, Yashiro Commissioner. जिजुत्सु मैंने अपने भाई को मारा है इम्प्योर्ड वर्ल्ड से बुलाकर अच्छा कैसे डोजुत्सु निंजुत्सु तो जिंशी इम्पैक्ट में भी नाम आया शायद सुकुना पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो तुम लोग To what do we owe the honor on this fine day? As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now. I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Our lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long she will be. But please, do come in. We will arrange some tea and snacks for you and your attendants. Hey! Paimon is not an attendant! You misunderstand. These two are dear friends. You're too kind. एक मिनट कामिसातो आयातो आया स्ट्रीम पे ओ भाई कामिसातो आया तो वेलकम टू द सी हम तुम्हारी स्टोरी को हिस्ट कर रहे हैं तुम्हारी स्टोरी को हिस्ट कर रहे हैं देख लो We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area.
Do you know where Ayaka is? Kamitato Ayato? Yes, हमें भी जानना है. Where is Ayaka? Where is Ayaka right now? When this story quiz is going on. Apologies for the interruption while you're busy with preparations. Please, let us know once Lady Hiragi is available. Nonsense, Commissioner. No imposition at all. This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted for them indeed. We're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. Yeah, she is coming in 10 days. No, I am saying in the game. I want to meet her personally in the game, not in the banner. I'm not asking from about the banner. I'm asking here in the game while this story quiz is going on. Where is Ayaka? We want to meet her. When the time comes, we'll invite everyone in the clan and even the general public to attend. That sounds splendid. देखो कितने अच्छे लग रहे हो तुम आया तो कितने हैंडसम हो. शी इज इन अ मिशन इन कैर्म. ओके तो वो कैर्म में है. ओके अरे कैर्म में तो हम गए नहीं अभी तक एक्सप्लोर करने. We'll leave you to it. Take care, Commissioner. अंडरग्राउंड मिशन. ओके नाइस. Seems like you guys talked a lot without actually saying anything. Hence why I dislike small talk. Our timing was not ideal, but never mind. I spotted a stall on our way over where we can pass the time. The owner always manages to come up with novel ideas. I'm one of his regular customers. इंस्टेंट कर्मा. अरे किस चीज का कर्मा आ गया तुम्हारे पर अब? Ah, it's you. Good to see you again. Yes, game is little lagging. Game is lagging, not seem. Seems like you're always showing up with a VIP in tow. Oh? So you know the owner as well? Yeah. Yep, we tried his dango milk a while back with the almighty shogun in Inazuma City. Ah, I see. So you were involved in that? Yes, I am. Ayato India आती है. I back to receive. Yes, welcome back, Sasuke. I'd caught wind of this dango milk, but I didn't know that it had anything to do with you two. I always order one of his creative drinks whenever I pass the stall. The flavor is always new and interesting. Oh, maybe my fault. Sorry. What is your fault? There is no fault of yours. This is our device fault. When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. Oh, thanks to you all, my business is finally beginning to take off. More and more people are willing to give my creative cuisine a shot. It gave me the confidence to decide that I'm going to stick to creative cuisine from now on. On the one hand, I wanted more people to be able to try out my culinary creations. On the other hand, I wanted my customers to experience the joy of being creative too. So I gave it a lot of thought and finally came up with an all-new business concept. Sounds interesting. What is it this time? I've decided to give complete creative control to the customer. I offer all sorts of ingredients, and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. As well as dango, I now offer rice cake, purple potato balls, black sugar, and sunsettia. Do they really all go well with milk? Hard to imagine, but who knows? It could be delicious. What if I were to choose some ingredients you don't have here? Would that be okay? Well, I guess so.
Any novel ideas you have, Commissioner, please feel free to tell me. I'll go buy the ingredients right away. The whole idea was to let my customers express their creativity freely. So of course, I shouldn't place restrictions on the ingredients if I can help it. Excellent. There are a few things I'd like to try. Lavender melon, seagrass, and sea ganoderma. What? You wanna mix those with milk? I do indeed. Why? What's wrong? डेंगू से याद आया डेंजो लॉल You really think that's gonna turn out tasting good? It's all about the experience. The taste is secondary. It's great to try new things. Traveler, any thoughts? Are you serious? Well, Paimon seemed like a scaredy cat if she opts out of this one. Okay, Paimon will have one too. मैं आता हूँ थोड़ी देर में ओके लेट्स ट्राई सी ग्रास वाला 3 milks with seagrass, please. No problem. Give me a second, I'll have them ready in just a moment. Here, your milk is ready. Give it a try. The seagrass is stuck in the straw. Oh, this is so much work. लॉल लॉल बोलने के लिए माइक ऑन किया था But it tastes all right. It captures the essence of the ocean. Your review seemed pretty positive, but Paimon still thinks there are better combinations. Taste is your key concern, yes? Obviously! Tasty food and drinks are some of life's most important pursuits. लॉल बोलने के लिए माइक ऑन किया था फिर लॉल हाँ बोला लॉल भाई बेनेट यार रिसेंटली आया था विश क्यों नहीं किया मैंने विश किया था मुझे बेनेट नहीं मिला मुझे सारे कैरेक्टर मिले मुझे पर बेनेट ही नहीं मिला था भाई लॉर्ड सतन मुझे बेनेट ही नहीं मिला और सब मिल गए कुजो सारा तक मिल गए मुझे राइडन चौगन तक मिल गई लॉल Well said. If I could say the same was true for me, I believe I'd be a very content man. Yes. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. To create some mental breathing room, I try not to overthink the less critical matters. फिर लॉल हाँ लॉल सैड भाई अरे कुछ नहीं हो सकता कोई नहीं अब आयाका तो निकालनी है भाई कुछ भी हो जाए आयाका निकालनी है आयाका चाहिए मुझे कैसे भी आयाका और हूता हूँ दोनों चाहिए मुझे दोनों की वॉइसेस बहुत पसंद है दोनों क्यूट हैं और दोनों के ही मेरे वॉलपेपर लगे पड़े हैं बैनेट मिल जाता तो कंटेंट वो बैनेट मिल जाता तो करंट की सबसे पावरफुल टीम बनवा देता सही है Having my sister attend public events in my stead and having Toma as housekeeper has also been a great help and allowed me to focus. ओह टोमा हाउसकीपर है नाइस टोमा नाइस कीपर क्यूट है कौन क्यूट है आया तो क्यूट है आया तो क्यूट है ना वैशाली मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा वो We're just passing the time here though, right? Is there anything else to think about than what we're doing right now? One or two things. Let's continue this discussion somewhere else. I noticed something before we left the Hiragi clan's residence. आया का तो मुझे चाहिए मुझे भी चाहिए आया तो tell me it's meant in English कुदासाई नहीं है क्यूट आया का इतनी तो क्यूट है आया तो क्यूट ब्रू क्या बोल रहे अरे ये वैशाली को पसंद आया होगा आई लाइक ये आए फिर ठीक है मुझे आया का चाहिए कैसे भी आया का हजॉर वेलकम बैक
लॉर्ड सतन पता है हमारी स्ट्रीम पे अभी कौन आया था? कामी था तो आया था लाइव स्ट्रीम पे, लाइव चैट में आया था। कामी था तो आया तो अच्छा, वो आयाका को क्यूट बोल रही थी। अच्छा, याय पसंद है उसे तो, वैशाली को याय मी को पसंद है। वैशाली जब याय मी को की स्टोरी क्विज करूँगा तब आना जरूर। याय मी को भी स्टोरी क्विज है, याय से मिलेंगे हम। No, it was just a small detail. I was curious to know their thoughts on the wedding, so I asked them about it. देखो वैशाली ने बोल दिया आया तो भी क्यूट है भाई। मेरी चैट में तो खुद आ जाता भाई, मेरी चैट में तो मैं खुद आ जाता। अरे वो तो मैं भी आता हूँ। देखो आ गया, लो आ गया मैं हाई कर दिया मैंने। कामी चाहते आया तो आई आर यू देयर? पता नहीं, शायद चला गया है। Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan. मेरे इम्पोस्टर्स आई मीन, अच्छा तुम्हारे इम्पोस्टर्स भी आते हैं? लॉल, एक बार मेरे नाम से भी आया था, मेरे इम्पोस्टर्स भी आया था, पर मेरे सब्सक्राइबर ही था वो, कोई मेरे सब्सक्राइबर ने सीख लिया था। लॉल। But that's not the truth. What do you mean? Hiragi Shinsuke is still in prison, meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. If I belonged to one of the assisting clans to the Hiragis, I would not be feeling optimistic about the future. But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for them. These are not unintelligent people. I highly doubt it is because they simply do not realize. I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. But still, the more I think back over that conversation, the more it doesn't sit right. Keep a close eye on them, Hisashi. Yes, sir. Whoa! Where did you come from? भाई एकदम से ये बंदा आ गया। लॉल। लो जॉर्ड का एक और जिंशिन इम्पैक्ट वाला स्ट्रीमर मिल गया। नाइस, आवाज अच्छा है इसका, सही कहा। This is one of my most trusted members of the Shimatsuban. He's been quietly watching out for us this whole time. शिमात्सुबान, अरे सायू उसी के पार्ट है। Merely doing my duties, sir. लॉर्ड सतन जा चुके हैं शायद। Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. Oh, and I almost forgot. That milk I just had? Please order one more and deliver it to Toma. As you wish, sir. ये कहाँ से टपका? लॉल, कौन टपका? कौन टपका? पता नहीं, एकदम से टपक गया। Oh no, poor Toma. लॉल। Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is now concluded. She's waiting for you in the courtyard. Thank you kindly. Let's go and see Hiragi Chisato. हिसाशी क्यों बोल रहा? ठीक है। लॉल 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 लॉल। Rain outlines your fate. डिवाइन पोस्चर आई गेट। रात को कम लोग सीन पे आते हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग आते हैं रात में। मैं उल्टा जा रहा हूँ। नो माई स्वॉर्ड। रेन आउटलाइन माई फेट। हो रही, मिल गई।
शादी Hi, nice to see you again, Chisato. I heard that Sir Kamisato had brought some guests, but I didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. How have you been faring? This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you, let alone here in the comfort of my own home. I'm doing very well indeed, thank you. You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. But of course. The Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. मैं तो हमेशा से ही गलत था लॉल ऐसा कुछ नहीं है Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful marriage. Thank you for your kind words. This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us, together. Sounds like things are pretty tough for you, Chisato. Yes. To be honest, I'm still a little nervous about it all. But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. I was in fact meeting with one of the Kanjo Commission's officers, Shinojo. Oh, really? Him? Mm-hmm. He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. He didn't mince his words. Basically, he doesn't want me to marry Kamaji. He has always been a calm and contained person who never acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. He thinks that now is a bad time for this wedding to happen. He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. There will no longer be a voice of authority in the Hiragi clan. And it could be a disastrous move for my personal image, too. Ayaka husband is from Kojuo. Kojuo क्या है अभी? It's just two families becoming one big family though, right? What's the big deal? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan. The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe I allowed myself to be pushed into this. क्लैन स्पेलिंग नहीं आती लॉ क्लैन की स्पेलिंग लिख के क्लैन पर स्पेलिंग नहीं आती बोल लॉ आयका इज हस्बैंड इज फ्रॉम कुजो क्लैन पता नहीं कौन से क्लैन से है वो आया का हस्बैंड ही बता सकता है ये ब्लू हेयर वाला इज गुड आयातो नाम है उसका आयातो I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter.
Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Perhaps I should have kept that part to myself. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose-designed, what with all the fancy lettering and so on. Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it... yes, I think so. Oh, do you mean to say that this letter is not what I thought it to be? आया का लड़की है वैशाली पहले बोल रहा। आया का तो लड़की ही है, मैंने कब मना किया। वैशाली इज आयातो सिंपी। अब मैं आयाका को भी ड्रॉ करूंगी करना नो आई एम सुकुनो सिंप। ओके सुकुना मैंने याय को भी ड्रॉ की थी। हाँ मैंने देखा था। Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... how did... Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In that sense, you could say that the origin of the letter is ultimately not of great importance. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter. But my position does matter. Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead, because we can face it all together. But now, I think I should give it some more thought. Marriage is the most important decision of your life. Don't let yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. To be together with the one you love is a sacred thing. It is my earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bittersweet one. I'll take to heart every word you have said to me. I can't thank you enough, Sir Kamisato. I'll think very carefully about your advice. All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Oh, wait! Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. What should I do? Oh, Kamaji.
Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. Ayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? Because Paimon's pretty sure you have an idea. I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. And the more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. We must be vigilant. Strange? In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible, and if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Yes, it's a smart strategy, far superior to the one adopted by the Tenryou Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them, all under the guise of simply encouraging a wedding. With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. Actually, we have evidence. His name is Shinojo. Shinojo? He should be back by now. Yes, sir. That's the second time you've done that! Paimon cannot deal with this. एकदम से आ जाता है भाई पाइमन डर जाती है कहाँ से लाते हैं ग्राफिक्स पता नहीं यार इतने अच्छा तुम जिनशिन की बात नहीं कर रहे Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected. They cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But, after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. No way! Whew. Lucky Paimon didn't say anything stupid. But Chisato got what you meant about the letter though, right? I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now. They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn, with even her marriage becoming a battleground for political power play. अनिकेत कुछ बोलो रे यार क्या ही बोले हम क्या बोलूँ मैं नहीं यार वैशाली सिम लैग नहीं है नो लैग रुक के चल रही है स्ट्रीम वो थोड़ा तो रुकेगी थोड़ा वो गेम है लैग नहीं हो रहा गेम लैग हो रही है
स्ट्रीम लैग नहीं हो रही, गेम लैग हो रही है। Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and above all, her independence. Huh. Marriage is such a trap. Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. This is what makes their approach so smart. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. So what are we gonna do? At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. I will wait for that moment to arrive. But first things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Tell me where Shinojo is. We'll head off right now. फाइट होने वाली। अब कॉल बनना पड़ेगा, लाइक शेयर बनना सब अल्लाह समझ के मुझ पे ऐसे मत बोल ऐप पे। खुश बोलो मगर जेंडर मत चेंज करो। Stop this at once. It's the Yashiro Commissioner. Well, we take orders from our master, no one else. Really? Then please, excuse me. अब मजा आएगा, आयातो को प्ले करना में मजा आएगा हमें। अब तुम लोग देखेगा आयातो। Soldiers, quick! Be still. Cut. I must withdraw. एक मिनट रुक जाओ, इसके मुझे डिटेल देखने दो। लेवल 71 दे रखा है, डिटेल में ओहो 79 सही बना रखा है। वेपन दे रखा है हेरन गेन पाइप पायरो की पावर। यार से टर्निप लैग हुआ, मतलब कि क्रैश हुआ, टर्न क्रैश हो गया, गेम भी फिर से स्टार्ट होने पड़ी। हो जाए यार, जल्दी रिलोड, जल्दी ख़त्म करना है। लगता है फिर से फाइट करनी पड़ेगी।
इतनी प्यारी सी तो हूँ मैं, किसने कहा कि तुम प्यारी नहीं हो? What are you doing? Release Shinojo this instant! Stop this at once. It's the Yashiro Commissioner. Well, we take orders from our master. No one... Really? Then please, excuse me. Battle formation! Soldiers, quick! Life goes on. Get them! Be still. Withdraw. Illusion shattered! The depths back. Cascade. Withdraw. तो कैसा लगा आया? तो वो तो बढ़िया था, शुरू से ही बढ़िया था भाई। उसके अटैक बहुत अच्छे ग्राफिक्स है, अटैक एनिमेशन वगैरह बहुत मस्त। We must report to Master right away! Hey, get back here! No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. Leave them be. आया तो ओपी है, आया तो ओपी है। पहले आया का हस्बैंड ये बता, तुम कौन से क्लैन के हो? तुम कोजो क्लैन के हो या कौन से क्लैन के हो या कौन से कमीशन के हो, ये बताओ। आया का हस्बैंड हमने बता दिया, आया को हाँ बता दिया। I think I saw a key fall to the ground during the fight. Let's free Shinojo first. But in all the chaos, it must have been kicked to one side. Where did it end up? What the? It's a tanuki? Oh, don't tell Paimon that the tanuki took it! Let's follow it and see. Thank you. Thank you.
आया का मैंने हमको बनाया अप्रैल फुल लॉल। आया का आ रहे कौन से कमीशन या क्लैन के हो तुम? ये भी बताओ ना। It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Oh, wait! You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazuma is at stake. My hitherto neutral stance ends now. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a commissioner, I am a servant of the Shogun, and it is therefore my duty to handle these tiresome matters on her behalf. That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Traveler, Paimon, let's get out of here. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner. I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. A truly egregious loss of decorum. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions? Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Konjo Commission. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything. Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. How could one do such a thing? Even if we put it down to a rare moment of impulsivity. I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. Every day I've been exposed to new and fascinating things. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off and throw it out of the window. The reason they give is this. The longest tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away, lest the song it sings lead you astray.
You... I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Kanjo Commission? Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Kanjo Commission. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play these petty power games behind the scenes. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. And now you have ruined your once bright future. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? This is at most a Kanjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold then, as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Kanjo Commission and Tenryou Commission, because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet it's all anybody's talking about now. Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing, even if it hasn't happened just yet. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Kamisato Ayato! You... How dare you! You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryou Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. वैशाली तुमने स्पेलिंग मिस्टेक की है आयातो की स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसलिए शायद 22% उसने दिया है। AYATO है। Hey! What was all that? Paimon didn't follow at all. They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of my plan. मैं उसको प्यार से आयोतो बोलती। ओके, सही है। एक बार आयातो भी ट्राई करो ना, क्या पता ज़्यादा आ जाए। क्रश या लव कर लो, लव ही कर लो ना।
लॉल। डोनी सिविल, ये कौन सी स्टोरी कुछ है भाई? पोनी सिविल, अरे यार हमें ईतो की स्टोरी कुछ करनी पड़ेगी कंटिन्यू करने के लिए। ईतो की स्टोरी कुछ देनी पड़ेगी मुझे यार इसे पूरा करने के लिए। ये क्या चक्कर है, बहुत गलत सीन हो गया। इसके 15 दिन है, ये मुझे करनी है, पर आयातो की स्टोरी कुछ पूरी होनी जरूरी है और उसके लिए ईतो की करनी पड़ेगी यार। ठीक है तो गाइस फिर हमें स्ट्रीम यहीं एंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ईतो की भी स्टोरी कुछ करनी पड़ेगी यार। ये गलत बात है आनी, तो मैं सोचा था आराम से करेंगे पर ये सबकी करा रहा है, गलत है। क्या मस्त कपड़े आया तो कि वो तो है यार, कमिश्नर है वो, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहा, तो उसे पहनने पड़ेंगे। ईतो ITTO है, ओ नहीं है वो एक। आउटलाइन योर फेट, रेन आउटलाइन योर फेट। उड़ गया, लगता है मुझे कल की सीम में करना पड़ेगा ये ईतो वाली स्टोरी को, इसको कल की सीम में दिखाना पड़ेगा। ओह लॉल, मुझे ईतो की स्टोरी कुछ करनी होगी ताकि मैं आयातो की कंप्लीट कर सकूं और फिर हमें क्वेस्ट कर सके मेन। तो मुझे कल डबल सीम देनी पड़ेगी क्या? अभी तो थोड़ा वाइट हो रहा है ना, हम शुरू ही नहीं कर सकते अभी क्योंकि स्ट्रीम टाइटल में तो कुछ है नहीं। ये कौन है? यही लड़ेगा। कहते छिपकली जैसे चढ़ रही रॉक पे, लॉल। ये रॉक पे तो चढ़ाई की नहीं। इन हीली चल्स को निपटाते हैं। Rain outlines your fate. Shine down. So? Now you shall perish. ये गया। ये भी हो गया। But a momentary distraction. प्रीमोजेंस हमारे इतने ही है 5000 यार, और 10 इंटरबाइट फेट। मतलब देखते हैं एक बार कितने में विशेष अभी हमारे पास है।
5 और मिल गई लॉल। ओके शॉप कहाँ है? पाइमन बार्गेन स्टारडस्ट एक्सचेंज इंटरवाइन में 42 विशेष है अभी हमारे पास। ओके और हमारे पास पीटी का क्या हाल है? हमारी हिस्ट्री पीटी कौन सी बनी हुई है ये देखनी पड़ेगी, कितनी बनी हुई है। करेक्ट। अरे यार हमारी 4 की पीटी है अभी, 4 की पीटी। तो गाइस हम स्ट्रीम को अभी एंड कर रहे हैं। इसका पार्ट 3 आएगा जिनशिन इम्पैक्ट। आयातो की स्टोरी को इसका पार्ट 3 आएगा, तो कल बने रहना। मैंने सोचा कल नया इवेंट करेंगे पर नहीं कर सकते। किस्मत खराब, किस्मत खराब, किस्मत खराब। ओके यस ओके। अरे 40 हो गए ना, ये बनाते हैं इन्हें दिमाग रेटी में टेलीपोर्ट मारते हैं और बनाते हैं ज़रा कंडेंसेशन। 4 हो जाएंगे अब हमारे पास। The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. ज्वाइन कर सकते हो। एनीवन कैन ज्वाइन द वर्ल्ड नाउ। अब हम बॉस फाइट लेंगे, थोड़ी सी नॉर्मली बॉस फाइट करेंगे। कोई है ऑनलाइन? बुलाते हैं इनको। टर्निक क्रैश हुआ था वैशाली, और कुछ नहीं, और कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, बट टर्निक क्रैश हुआ था। ठीक है, बताया ना टर्निक क्रैश हुआ है। लोड हो जाए जल्दी से, अब बाकी सब ज्वाइन कर ले मुझे। ताकि हम थोड़ी 10 बॉस फाइट देनी है, ताकि हमें हमारा पास आगे बढ़े। जैसे शंबल पास होता है, इसमें भी एक पास है। डॉगी ओपी।
The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. पहले हमें ये वाला करेंगे, पायरो वाले को भी करेंगे। Shine down. Terra smash. ओह, इतनी हद ले गया ये। Quick. निकलो 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 निकलो। Terra smash. है मस्त मगन। Terra smash. There is no escape! Beg for mercy. Illusion shattered! There is no escape! Now you shall perish! Detached from the world. Terra smash! Next up. Dust! Must press on. गाइड मुझे सीमा भी एंड करनी होगी, कुछ काम आ गया है। Thanks for joining. हार गया, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। कल ईटो की सिंगल नॉलेज यूज़ करके देखना, ईटर की तरह ओपी कॉम्बो है। ओके, ट्राई करेंगे।
अब तो सीमेंट कर रहे हैं। टाटा बाय बाय।